This conference will now be recorded. This is the sixth day of the training, and we are on to the section 1, that is steel making. Today's session will be a little bit smaller. Today what we have a clause of confidentiality, as we have always in every session, and we will go through the electric arc furnaces today. We are not going to go in details of other processes today. We will focus on electric arc furnaces, and then day after tomorrow there will be a session on doubt clearing, whatever we have learned so far, and next week we will start about uh, the energy optimizing furnace and then ladle refining. So that will cover all the steel making processes. After the ladle refining, we will have the clean steel as per the required properties containing the required chemical composition, and then we will continue with the wire rod mill. So next week our target is to finish the entire wire rod making, including the steel making. Okay, so as I told you again and again, this training program contains the information and the images sourced from the internet in good faith for the educational purpose. So please do not share it on any of the professional or social platforms. Keep it with you, read as much times as you want, see the videos as much time you want. Now coming to the electric arc furnace. So yesterday we have seen a little bit overview of the electric arc furnace, how it will look like. So electric arc furnace, as the name suggests, it will have electricity and it will have arc. So the arcing process basically will result in the melting of the scrap or other material fed into the furnace. So why we use electric arc furnace? Anybody can tell why we want to use the electric arc furnace? Why it is required basically? Why not to continue with the blast furnace? Because we have seen that blast furnace is having larger capacities. We have seen the operation also. Now you can compare the operation of the electric arc furnace and what you have learned about the blast furnace. So why we are not going for blast furnace but electric arc furnace? Why electric arc furnace is required in its first place? Any guess? Anybody knows why we want to go for The electric blast arc furnace? so blast Yes. furnace is little bit expensive, and electric arc furnace is not expensive. It can be Okay. used for smaller, smaller amount of what you call iron ore. Electric arc furnace can be used for smaller amount of iron ore. You will use iron ore or you will use something else in the electric arc furnace? So slag also, sir. हाँ. और What? सर इसमें रिसाइकल स्टील भी यूज कर सकते हैं ना उसके लिए. हाँ. And बेसिकली स्क्रैप यूज होता है ना इसमें. the main component is the scrap. And what else we can use here? Because in one of the processes we have learned that that particular output will be used in the electric arc furnaces. What is that? One more product we have learned apart from the blast furnace. What is the another process we have learned? DRI ना सर. Yes, so DRI also you can use it here. And iron ore you cannot directly use, but you can use in the form of what? You will Wooden make iron. what? One more process we have learned. We have to make pellets. You have to make pellets or sinter from that ore, and then you can feed it here. But that will be in very small amount. And when it is used, that is also we will see. So as you can see the schematics, from the schematics, there is a hearth. So first of all, we will go through why it is used. Number one is that it is less expensive, which is, Gaurav also answered the same thing. It is less expensive compared to integrated plant. So why it is less expensive? Because
when we have the integrated plant, what you will require? We will require the coke oven plant, sinter pellet plant, and blast furnace, which is a huge investment. Number two, if you are going to have the low volume, then electric arc furnace is more cost effective compared to the blast furnace, because for blast furnace you will require at least a volume of 2 million tons per annum. That is 20 lakhs ton per annum. So every month how much tonnage you have to produce? If it is 20 lakh per annum, then almost 80,000 or more than that. 1 lakh 6, how many tons? 1 lakh 1.6 lakh ton per month you have to produce. Okay, so 1.6 lakhs per tonnage capacity of the production. Small mills don't have that much capacity, so for them putting up a blast furnace is not viable solution at all. So what they will do, they will go for electric arc furnace, which is cost effective at even a scale of 0.15 million tons per annum, that is 1.5 lakh per annum. So hardly 12,000 or 12,500 tons per month. So it is a say achievable production capacities for small plants. जो भी बार्स बनते हैं, लो कार्बन स्टील्स के प्लांट्स है, टीएमटी बार्स की जो प्लांट्स है, they can operate at around this one, around say 4,000 how much I say, around 40 51.5 lakh per annum capacity. So they can produce this much. Okay, then another thing is that blast furnace, as we seen the operation, it is very critical operation, very complicated operation thing. So it has to run continuously. You cannot start stop, like monthly also you cannot start stop. So it has to run continuously, whereas electric arc furnaces you can start or stop as per your requirement, production requirement. So here you have a better flexibility for controlling the starting stopping operation, whereas in blast furnace it has to run continuously. Okay, so because of this the blast furnace has emerged, the electric arc furnaces has emerged, and it is becoming popular. Still around 25% to 30% of the total steel production is through the electric arc furnace route, because majority of the big plants, like JSPS, JSW, ArcelorMittal, in worldwide also, even Nippon Steel and Japan, there are big plants, all are through the blast furnaces, but small plants are through the electric arc furnace. But there is one thing, the requirement is of electricity. So almost it will require 360 to 600 kWh per ton of steel. So that much units. So per ton you will require 360 to 600 units of electricity. So that is a added cost actually. And you will require the supply of electricity also. So as I told you, around 25%, 30% of total world production is through the electric arc furnace route. In case of basic oxygen process, how you are getting the heat generated in basic oxygen furnace? What kind of heating you are doing there? Anybody please? सर हॉट मेटल यूज करते हैं ना, वो जो ब्लास्ट फर्नेस से आते हैं. हाँ, but how you are heating that one? Any external heating source you are using there in the basic oxygen process? सर वो हाई वेलोसिटी पे ऑक्सीजन हाँ. सप्लाई होता है. Yes, so it is basically what kind of reaction it is? Exothermic reaction.
You don't need external electricity or external burner, or hot air like we are using, or coke, because in the blast furnace coke is the media for heat generation. But in the basic oxygen furnace, what you are doing, you are blowing the oxygen, and because of the reduction reaction, it is an exothermic reaction, so that generates heat itself. How much is the temperature? Yesterday itself we have learnt, what is the temperature range we are getting in the basic oxygen furnace? 1200 to 1600. Yes, good. And what we are adding to control that temperature, because very high temperature can damage the refractory lining. So what we are doing in the basic oxygen furnace, what you are adding? Limestone head. No, limestone is basically for the slag, na? What you are adding for cooling purpose. Yesterday we have seen, because we have to control the temperature, we have to add something. So water cooling purpose. Yeah. So, we use cold water. No. Cold water where you will use? That is that cold water, basically the lining is of cold water cooled in the blast furnace. And lance here in the basic oxygen furnace, whatever the copper lance you are using, that is also water cooled. But what you will use to cool down the metal, yesterday only we have learned what you can add in the metal. What you will add at the most? You cannot add impurities, na? So you have to add either metal scrap, around 20%, or you can add DRI. Okay, or you can add pure form of pelletized iron ore. Yesterday we have seen, na, in the basic oxygen process. Clear? So here in the electric arc furnace, because there is no exothermic reaction as such, your temperature control is much better compared to basic oxygen process. Because in the basic oxygen process, the temperature rise is because of the exothermic reactions taking place, and in the electric arc furnace, the temperature is of the melt is because of the arcing process. So you can change the voltage settings to get the required temperatures. Number 2, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क की प्रोसेस होती रहती है, so temperature control अगर better है तो क्या होगा? It can allow you to do the larger additions of the alloy, compared to the basic oxygen furnace. So here you can add alloying element at this stage itself. Many times we will, as we go further, I will tell you then. So number 2, जो कार्बन कंटेंट होता है इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, it is as low as around 0.05%. Sorry, it is around 0.05%. and नाइट्रोजन जो होता है ज्यादा होता है, because 40 to 120 ppm इसमें नाइट्रोजन आ जाता है. But the cleanliness of the basic oxygen furnace is much better, because we are putting the oxygen, so it will remove much more amount of the impurity, so that oxygen content, nitrogen content will be around 30 to 50 ppm only in the BOF stream. And nitrogen will, what it will cause? Nitrogen, we have studied this yesterday, we have discussed why you are not using air but oxygen, why the oxygen started to use at its first place. सर नाइट्रोजन not से air? क्रैक फॉर्म हो सकते हैं. Yeah, so what that call? Nitrogen embrittlement. Brittlement, yes. Yeah, okay. So the first place, earlier people were using air, but they shifted to the oxygen process, because the oxygen gives the advantage of lower nitrogen ppm. Okay, and nitrogen causes the nitrogen embrittlement. So during the subsequent
operations like drawing or some twisting operation, the steel becomes embrittle, means there are chances that under static load or under dynamic loading, the wire or the component may break. Okay, so where there is a static loading or dynamic loading, high amount of loading is there, people use cleaner steel. Cleaner means lower amount of impurities, that the nitrogen and oxygen is also one kind of impurity. So lower it is, better the quality of the steel. Now when the nitrogen is higher in the arc furnace, how it can be reduced? It can be reduced by having a heating with a short arc, means जो arcing होता है long arc में रहेंगे वो short arc करते हैं, and they can also have the agitation of the bath using the carbon monoxide, or they can also have agitation using the argon gas. And one more thing is that for the electric arc furnace, the quality of the scrap is of very much importance. You need the scrap, with a very low amount of copper, chromium, nickel, molybdenum, tin, and it should be less than, put together, 0.2% in the scrap, so that you can produce a steel with a higher ductility. तो अगर आपको low carbon steel with higher ductility or even high carbon steel with required drawability अगर बनाना है और required ductility बनाना है, the scrap which is being used should have lower amount of all these elements. So that disadvantage is there, that the scrap may contain higher amount of this one if it is sourced from say non critical application जहाँ पे होता है वहां से अगर scrap source हो रहा है तो it will have a higher amount of these things. In the wire rod or in the wire application, what we are putting, the tramp element maximum percentage is 0.3%. Okay, so for whenever we are giving the technical delivery condition to a supplier, wire rod supplier, what we are specifying, the trace element or the tramp element like copper, chromium, nickel should not be more than 0.3% put together. Okay, and Sure. yeah, So here you have written scrap of copper, chromium, nickel, silicon should be less than 0.2%, not 0.3%. Yes, sir. yeah. For making this one steel for ductility, not for, I'm saying, wire rod application. Normally for making the ductile steel, the scrap which is used in the electric arc furnace should have this composition, less than 0.2%. But when we give the specification for the wire rod, we are giving up to 0.3% maximum, all these elements. Okay. The lower the better it is. Yes. So when we are giving the specification to JSPL, JSW or any other wire rod manufacturer for the wire application, what we are mentioning is all these tramp element should be less than 0.3%. We are not giving 0.2%, we are saying 0.3%. It should be less than 0.3%. तो आपके यहाँ पे जो भी TC आती है उसको निकाल के देखो कल and see whether all these elements add together is more than 0.3 or what. है ना, it should be actually around 0.2-0.25%. अगर वो 0.3 के ऊपर है then there is a serious issue. It should not be at all. नॉर्मली होता ही नहीं है ऐसा, बट आप अपनी फिर एक आपको सबको टास्क है कि यू चेक द टेस्ट सर्टिफिकेट दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम द वायर रॉड सप्लायर, हाउ मच all these tramp elements are there. Okay. Yeah. Sir, here you have written charge equals to scrap or scrap. I think it would be slag, scrap or slag. नहीं, चार्ज इन द सेंस, चार्ज जो हम अंदर करते हैं ना, चार्ज इन द सेंस व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड द फर्नेस. जैसे इन द ब्लास्ट फर्नेस, व्हाट इज द चार्ज फॉर द ब्लास्ट फर्नेस? So the burning of coke. No, charge is basically the iron ore. Okay. The charge
consists of iron ore and coke. Iron ore plus limestone, and coke is the charge for the blast furnace. Charge is basically the input thing. So here, Yes. what you have in the electric arc furnace, either it will be scrap, okay, entire scrap. There are mills which are entirely using the scrap only, not anything else. Okay. Or it can be scrap plus DRI, that is directly reduced iron, Okay, sir. or DRI plus solid BF iron. What is that BF iron? I had shown you. Blast furnace iron. No, sorry, this is okay. This is BF. Or another thing is Pellet, that sir, pellet. no, it is okay. Blast furnace iron, but in the solid state. जब हमने blast Yes. furnace की process देखी थी, there is a molten metal also, and you can convert it to the solid. This also pellets also, pellets Yes. or ingots also, small. So that can also be used. Another thing, Okay. HBI, DRI के साथ साथ it can use the HBI also. What is that HBI? DRI in the form of HBI also it can be used. That is hot briquetted iron. जो हमने देखा था ना, छोटे छोटे पैलेट्स बने थे अराउंड 100 मिलीमीटर 140 मिलीमीटर ऐसे डायमेंशन थे उसके, 30 मिलीमीटर. तो जो डीआरआई प्लांट, अभी आपको समझा कि जो डीआरआई प्लांट रहते हैं, स्पेसिफिकली ओनली डीआरआई प्लांट, व्हाट दे विल डू, दे विल सप्लाई टू दिस कंपनीज, सच कंपनी. क्योंकि स्क्रैप में अगर इंप्योरिटीज ज्यादा है, so you have only option to add the material which is having known percentage of the impurities, so you can adjust the charge. So you know that DRI is having less percentage of impurities, and you can add that one to dilute the thing. And इसमें भी if required there is a blowing, there is a addition of the lime. Next slide में देखेंगे हम जो process है उसका. It can lime can be added as a for a slag generation, and even some cases blowing is also done. Okay, blowing with the oxygen is also done, but not that vigorous which is happening in the basic oxygen furnace. आप इसमें व्यू देखिए, one more view. Now what is the difference you can find out between this furnace, electric arc furnace, and this electric arc furnace? Because there are the principle, basically the principle, melting principle is same with the electric arc, but there will be variations, inventions will be there, some variations will be there as the advancement takes place in the technology. जैसे एक छोटी सी वायर ड्राइंग मशीन की बात करें, या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पैटेंटिंग फर्नेस व्हाट वी यूज, देयर इज अ लॉट, द basic principle is same, but the advancement comes in case of the small components. जैसे उसका बर्निंग कैसे कंट्रोल होगा, ऑटो फायरिंग बर्नर्स आ गए हैं ना, जो फ्लू गैस है, फिर एलएनजी, पहले ने क्या एलपीजी यूज होता था, नाउ पीपल आर यूजिंग नेचुरल गैस और एलएनजी. तो ये सब एडवांसमेंट्स आते रहेंगे. So what is the difference you can see between these two diagrams, here and here? There are two prominent difference you can see. I am putting at this diagram and this diagram. Anybody can observe two basic changes, difference? Yes, sir. Slag door and ladle. Ladle, what is that? Slag door is okay. Ladle तो anyhow, ladle will be there, है ना? Some ladle is not shown, okay, but the basic the functioning of the furnace, by that view, how you can differentiate. One is this tap hole. One is this tap hole. It is where it is at the bottom, whereas in this system it is going through this one or going from this side. Clear? Yes. Yeah. So it can be moved from this side, but in this diagram you can clearly see the tap hole is given from the bottom. It is called vertical tap hole. And another thing is that the system for tilting it is also tilting, because how you will remove this one, so it is tilting by way of rollers.
and in this case it is a hydraulic rocker cylinder जैसे. Okay, so अगर हम उसके इसकी बात करें, the shell and everything, it is made with the heavy steel plate. जो ये structure होता है, all the electric furnaces, and it can be having the bottom side, it is having the hearth, and then the side walls, and the what it has a top roof. So ये roof जो होता है ना total removable रहता है, it can be removed completely. Clear? And it is made of heavy steel plate. अब steel plate के अंदर क्या रहती है? Refractory lining which withstand higher temperature as well as the molten temperature and erosion by the molten temperature. This electrode, 3 numbers, are basically of graphite, and जो shell diameter होता है, we are talking about this diameter of the furnace, or you can say this diameter varied from 10 ton to 300 ton, because you can produce 10 ton also. So you can see there is a flexibility. You cannot produce 10 ton in the blast furnace, but electric arc furnace you have the flexibility to produce 10 ton, 100 ton, 300 ton. So 10 ton in between also capacities are there. So 10 ton will have around 2.5 meters of shell diameter. 100 ton will have 6 meters, whereas 300 tons have 9 meters of shell diameter. Okay, different companies manufacture it, they have different dimension, but you can see, yeah. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, मिस हो गया था. Okay, yeah. So the basic steel electric arc furnace is made of the heavy steel plate. Okay, the structure is made of the heavy steel plate, and then inside there will be the refractory brick lining. The high temperature, it can withstand high temperature and erosion by the molten metal. After this, basically you can divide it into 3 parts: the hearth, the side walls, and the roof. Roof जो होता है ये total remove हो सकता है. You can see this arrangement here, ये electrode को ऊपर नीचे करने के लिए है ना. ये जो arrangement दिया हुआ है यहाँ से, it is basically for the lowering and upping of electrodes. Okay. Yeah. And this shell diameter, total shell diameter, will depend on the capacity of the electric arc furnace. So for a 10 ton electric arc furnace, it will be around 2.5 meters. 100 ton के लिए around 6 meters, and 300 ton 9 meters. It can vary. It is just a guideline, and it can vary according to the design of the furnaces, the electric arc furnaces. There are various types of, yeah. सर इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही यूज क्यों करते हैं? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दी, एक तो कंडक्टिविटी जो रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके लिए, बिकॉज ग्रेफाइट इज नथिंग बट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड सेकेंडली फिर उसका जो इरोजन रेट होता है वो कम होता है, एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर जनरेट होता है इट इज ऑफ वेरी हाई, दिस वन हाई डिग्री. आप कॉपर वगैरह तो पाओगे ना, कॉपर वगैरह तो मेल्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, अराउंड 1089 समथिंग उसका मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का. You cannot use that electrode, the graphite is used. And secondly, आप अगर ये इरोड होता है ना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज ग्राफाइट लगा दिया और पूरा लाइफ लॉन्ग चल गया, इट विल कीप ऑन इरोडिंग, है ना, बिकॉज हाई इलेक्ट्रिक है तो इरोड होता है. तो आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है कि इरोड होने के बाद जब वो मटेरियल में जा रहा है, सो इट शुड नॉट स्पॉइल द मटेरियल. ओके, दैट इज व्हाई वो कार्बन मटेरियल रहता है, तो हमको मतलब यूज कर सकते हैं. हाँ, उसमें मींस डेट्रीमेंटल कुछ नहीं है. अराउंड ज्यादा बढ़ता भी है तो डेफिनेटली यू हैव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर. आप ऑक्सीडाइजर्स डाल रहे हो उसमें लाइम वगैरह, तो उसको वैसे भी स्लैग में कन्वर्ट कर देता है वो. और
Okay. बाद में आपका कार्बन है तो FeO जब बनता है तो कार्बन उसको रिड्यूस कर देता है, तो CO बन के बाहर होता है और Fe आपके पास वापस आयरन में चला आता वापस आ जाएगा। ओके ओके। है। तो उसके बाद उसमें हाइड्रोलिक अरेंजमेंट रहता है, इसमें कई कई पे रोलर अरेंजमेंट रहता है। सो द बेसिक पर्पज इज टू टिल्ट इट, टू रिमूव द स्लैग एंड द मोल्टन मेटल। अब इसमें जो अरेंजमेंट किया है इन्होंने, फॉरवर्ड टैपिंग फॉर स्टील, बैकवर्ड टैपिंग फॉर द स्लैग। एंड इस अरेंजमेंट से फायदा यह होता है कि यू हैव टू हार्डली टिल्ट ओनली 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्रीज एंगल। तो 10 डिग्री के एंगल में भी आपका मेटल टैपिंग कंप्लीटली हो जाता है इसमें। और वो जो टैप होल रहता है उसको कैसे क्लोज करते हैं, नॉर्मली इवन ब्लास्ट फर्नेस की बात करें या फिर कास्ट आयरन की जो फर्नेसेस होती है, क्यूपोला फर्नेसेस की बात करें, कोई भी फर्नेसेस, इनके जो टैप होल रहते हैं, जो भी होल रहता है उसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल से ब्लॉक कर देते हैं, है ना। रिफ्रैक्टरी मटेरियल, दे हैव द रिफ्रैक्टरी मटेरियल, उसको गीला करते हैं एंड दे पुट दैट वन, ऐसे बड़े लकड़ी के ऊपर वो रखते हैं एंड उसको पुश कर देते हैं अंदर। तो वो क्या होता है, टैप हो जाता है कंप्लीट, और जैसे जैसे गर्म होता है इट बिकम्स हार्डन एंड साइड से उसको फिर रिमूवेबल स्टील प्लेट लगा के रखते हैं। So now when the charge is ready, the molten material is ready for tapping, they will remove the steel plate and then they will remove the refractory material, but it is very hard, है ना। तो उसको निकाल देते हैं and the tapping will start from the bottom and then it will be taken into the ladle. अभी इसमें जो वॉल्स है यहाँ पर आप देखेंगे, ये वॉल्स एंड रूफ जो है ये टोटली किससे बने हुए हैं, इट इज विद दी वाटर कूल्ड पैनल ना। तो स्टील पैनल्स रहते हैं बट इट इज अ वाटर कूल्ड कंटिन्यूअसली। रूफ में 3 ओपनिंग तो होना ही होना है फॉर द इलेक्ट्रोड्स, और एक होता है फ्लू गैस के लिए आउटपुट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसके अंदर और रिफाइनिंग करना है यहीं पे इसी स्टेज पे, तो ऑक्सीजन लॉन्च होता है इसमें, या फिर एर्गोन गैस का लॉन्च होता है फॉर स्टरिंग। सैंपलिंग निकालने के लिए एक पोर्ट रहता है, टेस्टिंग करने के लिए, एंड आपको अगर इंस्पेक्शन करना है उसके लिए, तो वेरियस होल्स वहां पे दिए रहते हैं जो वॉल्स में रहते हैं। Sir, I have not detected the flue gas outlet here in the diagram. हाँ, उसमें दिखाया नहीं, जैसे इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा, वहां पे दिया नहीं है। तो उन्होंने क्या, डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम टू डायग्राम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। Yes, sir. सो बेसिकली यहाँ पे जो इनका पर्पस था, आपको ये दिखाना था, जो स्टील प्लेट्स है, वाटर कूलिंग जैकेट्स है। अगर आप इसमें जाओगे डायग्राम में, तो हियर दैट वाटर जैकेटिंग इज नॉट देयर, है ना। इट इज कंप्लीटली रूफ लाइनिंग, इसमें ब्रिक लाइनिंग दिखाया हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड वेरियस पिक्चर्स। यहाँ पर टिल्टिंग अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पर अलग है। बट दैट होल विल बी देयर। इवन जैसे लांसिंग के लिए होल्स है वो नहीं दिया दिखाया है यहाँ पर, बट एक्चुअली इट इज देयर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी जैसे जो प्रोसेस होता है इसका, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले आप उसके अंदर स्क्रैप चार्ज करोगे। आई विल शो यू द वीडियो एट द एंड ऑल्सो, है ना। आफ्टर वन मोर स्लाइड आई विल शो यू द वीडियो, इट इज ऑफ अराउंड 5 minutes, and there you can see that what is the modern steel electric arc furnace looks like. It's a modern thing and you can get a clear picture through that one. So सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज स्क्रैप करते हैं। लाइट स्क्रैप, हेवी स्क्रैप, उसमें चार्ज करते हैं। लाइट स्क्रैप बेसिकली क्या करता है, एक्ट एज अ कुशन एक्ट करता है। नहीं तो आप अगर हेवी डाल दोगे तो हाथ वगैरह डैमेज हो सकता है। तो पहले लाइट स्क्रैप, फिर हेवी स्क्रैप। अब ये जो स्क्रैप होता है, नॉर्मली ये टोटली कोल्ड स्क्रैप नहीं डालते हैं, because if you use the cold scrap, again your energy requirement will be there, higher will be there energy requirement. Secondly, जब तक मोल्टन मेटल नहीं बनता है ना, तब तक इलेक्ट्रोड का जो करंट फ्लो है ना, आर्किंग जो प्रोसेस है वो थोड़ी एबनॉर्मल होती है। इट इज नॉट दैट मच स्मूथ, बिकॉज जो डिस्टेंस रहता है
between the material and the arc is not that say controlled properly, और जैसे जैसे मेल्ट होता है वो, फिर वो आर्किंग प्रोसेस एकदम परफेक्ट होने लगता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी इसमें से फ्लू गैस निकल रही है या सम एक्सटर्नल हीटिंग अरेंजमेंट से स्क्रैप को पहले प्रीहीट करते हैं। जो वीडियो में दिखाऊंगा उसमें तो क्या किया उन्होंने, इट इज यूजिंग डायरेक्टली द हीट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉप फॉर प्रीहीटिंग द स्क्रैप। सेम वे जैसे हमने देखा था ब्लास्ट फर्नेस में, जो हॉट एयर ब्लास्ट आता है, that CO coming out of the blast furnace top is used to burn in the gas stoves, which is preheating the air. Same way you can utilize this the flue gas for heating the metal scrap, है ना। फिर उसको लोअर करते हैं इनिशियल प्रोसेस के लिए, पार्शियल मेल्टिंग होता है यहाँ पर, अगेन फिर चार्ज करते हैं, इट इज नॉट अ सिंगल चार्जिंग, है ना। अगेन स्क्रैप चार्ज करते हैं, फिर इलेक्ट्रोड लोअर करते हैं उसको मेल्ट करने के लिए, फिर मेल्टिंग होता है, सो कार्बन डाला जा सकता है और स्लैग फॉर्मर्स लाइक लाइन इट कैन बी एडेड समटाइम, आई एम सेइंग समटाइम, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। if you are using 50% of the DRI or any iron ore pellets and 50% of the scrap, then definitely you have to add the slag formers and other things, carbon for the deoxidation reduction reaction, okay, because otherwise what will happen, the oxidation will takes place of the iron. It is not a sealed one, na? There is a oxygen is always present on that whatever the earth is there, so oxygen will directly react with the iron to form iron oxide. To avoid that one, we have to form the slag on the top. And second thing is that so हाँ कौन है, जस्ट मिनट, हाँ excuse me. Yeah, sorry, yeah. So yes. Okay, so basically this arcing and lot of heat is generated, it can damage the roof and everything. तो स्लैग वगैरह जो रहता है तो क्या करेगा, जो रेडिएशन से जो हीट जा रही है वो भी लो कर देगा, है ना, बिकॉज स्लैग इज अ बैड कंडक्टर। सो उसको क्या करेगा, वो स्लैग में जो कंटेंट है विच इज बेसिकली लाइम रहता है, उसमें सिलिकेट्स रहते हैं और आयरन ऑक्साइड रहता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, उसको जो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का जो टेम्परेचर है उसको फिर वहां पे बाहर जाने से ये कर देते हैं, रोकते हैं। सो योर वॉल लाइनिंग, है ना, योर रूफ लाइनिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सेसिव हीट। Here it is written that it shields the side wall and it will also permit the higher power setting, because higher power setting करोगे तो हीट जनरेट होगा जो आपके वॉल को डैमेज कर सकता है, बट व्हेन वी हैव दैट वन इट विल शील्ड, एक्ट एज अ शील्ड। नाउ अगर आपको कार्बन कंटेंट है ज्यादा ही है तो हाउ इट विल बी डिक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज बाय द ऑक्सीजन ब्लोइंग और इंक्रीज बाय द कार्बन इंजेक्शन। अगर आपको बढ़ाना है तो यू हैव टू इंड्यूस द कार्बन, और अगर आपको डिक्रीज करना है तो ऑक्सीजन ब्लो करना है। दैट फैसिलिटी इज देयर, बट इट कैन बी यूज्ड बेस्ड ऑन द मेटल केमिस्ट्री, ठीक है। एंड इन बिटवीन द सैंपल्स आर चेक। टोटल साइकिल जो रहती है डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर भी, बट इट कैन वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 4 आवर्स। आप प्रीहीटिंग करते हैं, जो बेसिक केयर लेते हैं, तो इट कैन बी लोअर डाउन टू 1 आवर टू 2 आवर्स ऑल्सो, टैपिंग टू टैपिंग।
और जैसे आप ऑक्सीजन ब्लो करेंगे, अगेन द हीट जनरेशन विल बी देयर because of the exothermic reaction. But if you are using only the scrap and your chemistry has matched with the required, then you don't have to utilize the oxygen blowing. ठीक. Now जो इलेक्ट्रोड की इसमें कोई इशू किसी को? Okay. So just a minute. Yeah. So जो 100 टन का जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है, इट विल बी अराउंड 600 मिलीमीटर्स, ऑलमोस्ट 2 फीट इलेक्ट्रोड रहता है इन द डायमीटर. Understand? So it will have around 600 millimeters of electrode. And what is the consumption rate of the electrode? It will be consumed at around 3 to 6 kilogram per ton of steel. So every kilogram of steel will consume electrode at a rate of 3 to 6 kilogram per ton. Again, it depends on the type of the operation, what the kind of operation you are doing. As I said, even scrap can be preheated in the electric arc furnace by oxy-fuel burner for initial thing. So how that oxy-fuel burners are used, that will be shown in the that video what I am going to show you. तो उसमें आप देखोगे साइड से कुछ बर्नर दिखेंगे. So it is basically for the preheating, or you can preheat the scrap outside also. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो करंट यूज हो रहा है, इट कैन आइदर बी एसी और डीसी ऑल्सो. बट डीसी में क्या होता है, यू विल रिक्वायर लार्जर कैपेसिटी ऑफ द रेक्टिफायर्स ऑल्सो. और डीसी में क्या होता है, यू विल हैव ओनली सिंगल इलेक्ट्रोड फ्रॉम द टॉप एंड 2 इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द बॉटम साइड, and that will be embedded inside. तो डीसी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि दैट इरोजन ऑफ द इलेक्ट्रोड जो रहते हैं ना, दैट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट. और जो हर्थ लाइनिंग रहती है बॉटम की, हर्थ लाइनिंग ऑल्सो गेट डैमेज, बिकॉज जो इंटीग्रिटी है वो थोड़ी सैक्रिफाइस होती है व्हेन यू आर पुटिंग द इलेक्ट्रोड. So this is about the electrodes which is being used. Now I am going to show you the video, and after that you can have questions regarding today's session. Let me just try whether it is directly done from here. I'm just opening it. Let me know whether you will be able to see or not. You people are able to see the video now? Can somebody please confirm? Yes, Yes, sir. sir, but it's a little bit short. Now Yes, sir. Fine, sir. full screen you can see, na? Yes, sir. Okay, Yes, it's sir. a 5-minute video. So just a voice is coming, that music is coming or not? No, no, sir. Music is not coming. No. No, anyhow, because there is no commentary, it is only the music.
ठीक है, तो अभी यू आर सीइंग दिस वीडियो, है ना? सो दिस इज हाउ टेक्स्ट प्लेस। तो इसमें आपने दो तीन चीजें दिखी होगी। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, समथिंग न्यू? कैन पीपल टेल one thing that yes, what they observed through this video? Hello. हेलो। Yes, sir. हाँ, वॉइस आ रही है ना? Yes, sir. Yeah. So can somebody tell me? Can people tell that yes, what they observed in this video? So the three different types of electrodes used. Okay. And one more thing. I mean, there are so many things were there because some captions are coming out, na? Yes, sir. Now the picture what I am showing here, what is that? What they are written here? Just flat free tapping. Yes. So in this case, how they are avoiding the slag to go inside the tapping? When you are tapping, the slag is not getting removed. Okay, because slag is necessary for the reaction and for protecting the walls also. In the picture itself, you can easily see there is a water cooled lining. This is the water cooled lining. And this, they have lowered this one here. They have given one separation, small separation. They lowered this separation so that when you tilt it, only the metal which is at the bottom is going to the tap, not the slag. Flat, yes. One more thing was there, how it is being heated. Everybody has seen the video now, so everybody please contribute what they have seen in the video, because it was a nice demonstration of a complete process, almost a complete process. वहां पे एक ने क्या ऑप्शनल एडिशन के लिए दिया था, what was that? What can optionally added? So palette. One word was there. They can also use the HBI also, pellets and HBI, है ना? hot briquetted iron. Okay. जो निकलता है वही वो hot briquetted जो उसके छोटे छोटे बनाते हैं ना, ब्रिक्स बनाते हैं, तो दैट
कैन ऑल्सो बी यूज। उसके लिए एडिशनल टैपिंग देके रखा था उन्होंने फीडिंग के लिए। एंड यू पीपल मस्ट हैव सीन दैट द स्क्रैप इज लोडेड ऑनटू द टॉप and kept there, and this heat coming out is being utilized, है ना। फ्लू गैस की जो हीट है उसको यूटिलाइज करते थे फॉर प्रीहीटिंग दैट वन, एंड देयर वर बर्नर्स फ्रॉम द साइड आल्सो, क्योंकि आर्किंग सर वो सेंटर पे होता है। हेलो या सर स्क्रैप को हीटिंग कैसे करते हो वो लोग? स्क्रैप का स्क्रैप टेम्परेचर मिनिमम 600 चाहिए ना, 600 to 700। आपने देखा ना टॉप पे, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, जो टॉप में था, टॉप में हीटिंग हो रहा था ना उसका, एंड ऑक्सीऑसिलिटी फ्लेम भी था। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल रन द वीडियो एंड वन बाय वन वी विल गो थ्रू दैट वन, ओके, because I think you people have missed so many things in that. So I will stop the video in between and just let me know that once you start seeing the video. आपको भी फुल स्क्रीन दिख रहा है? Can somebody confirm? Yes sir। Okay, so we will go one by one now. Now this is a complete plant. From the top you can see, ये यहाँ पर क्या है? These are the scrap bins here. Okay, ये साइड में जो दिख रही है यहाँ पर, these are all the scrap bins. Just let me take the. Okay. So ये जो एरिया है, these are the scrap bins. This area is a scrap bins, various scrap bins. Now what they have written here, high flexibility in the scrap quality, means they have created different beans. Okay, उन्होंने क्या किया, different beans तैयार किए हैं to have the scrap अलग अलग क्वालिटी का। Now what they are doing, they are putting the scrap inside this, you can say, car, okay, movable car, and the opening is from the bottom side. They are loading it from the bottom also, and like a shovel, and then it is moving. अब देखिए यहाँ पर उसको रख दिया है, हाँ ये स्क्रैप, अभी ये स्क्रैप उठाया उन्होंने और इसमें डाल दिया है, कार में डाल दिया है। नाउ इट इज मूविंग, है ना, दिस ट्रॉली इज मूविंग टू द टॉप, it's the top charging, and it is fully automatic. So what they will do here, it will be opening from the front portion and putting the scrap here. Now here you must be thinking that why it is not falling, but it is actually, it's a closed one. This is a closed one, but for the purpose of showing they have given us a cross sectional view, otherwise it's a closed one. ये साइड में पूरा क्लोजिंग है, ये साइड जो है it's a closed actually, same as this one, it is also closed. That's why it is piling up here. So you get the piled up of the scrap. ये पूरा स्क्रैप आप देखिए, एंगल से, पाइप से, छोटे छोटे एलिमेंट से, है ना, उसको कई जगह पे कट करके भी रखा जाता है। यू कैनॉट पुट डायरेक्टली द बिग दिस वन। अभी गजानन, you can see, you are asking that the scrap temperature is 600 degrees centigrade. So from here, where it will go? It will go from here only.
So you can easily see this portion you are seeing. Change the color. ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर? गजानन, Yes, sir. हाँ, ये जो पोर्शन है अभी नीचे Yes, sir. थोड़ा हीट है ऑलरेडी, मोल्टन मेटल है ऑलरेडी, है ना? तो जब भी आप बाद में स्क्रैप लोड करोगे तो यहाँ से हीट कहाँ जाएगी? फ्लू गैस यहाँ से तो जा रही है। Yes, तो sir. ये जो हीट, हाँ, तो ये जो हीट है, नॉट फ्लो, बेसिकली इसकी जो हीट है वो यूटिलाइज कर लेंगे इसको गर्म करने में। तो ड्यूरिंग द ठीक। ऑपरेशन विच इज हैपनिंग एट द बॉटम, है ना, वो ऑपरेशन के साइकिल तक यहाँ पे पहले ही लोडिंग करके रख देंगे, एंड Yes, यू sir. विल गेट, हाँ, यू विल गेट द स्क्रैप, preheated scrap at a 600 degree centigrade. Okay. सर मेरे को लगा था जो फ्लू गैसेस है ना, जो फ्लू हाँ, गैसेस निकलती होंगी उससे स्क्रैप हीट करते होंगे ऐसा लगा। नहीं, वो तो इसलिए हो रहा है ना, ये तो ऊपर से जो निकलेगी वो गैस ही निकलेगी, तो वो भी यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। और बाकी फिर जो क्लीनिंग में जाती है, अगर ऑफलाइन, नॉट इन दिस प्लांट, बाकी बहुत सारे प्लांट में ऑफलाइन भी हीट करते हैं। दिस इज द Okay, sir. टिपिकल प्लांट, वेरी मॉडर्न प्लांट, है ना, लेटेस्ट प्लांट, इसमें इस तरह का है। पर जहां पर साइड चार्जिंग वगैरह होता है, वहां पर लोग क्या करते हैं, प्री हीट भी करके डाल सकते हैं आउट ऑफ द फर्नेस, है ना। दिस इज वन ऑफ द मेथड, दे आर यूटिलाइजिंग इट वेरी इफिशिएंटली, क्योंकि यहाँ पर Okay, sir. टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाएगी गैसेस टेम्परेचर कम होते जाएगा। ओके, Okay. Okay. तो इसमें 600 डिग्री तक हो गया इसका टेम्परेचर अराउंड, रेड आउट हो रहा है। अभी ये चैनल्स साइड में जाएंगे। नाउ दिस चैनल्स विल मूव, ये इस साइड का इस साइड जाएगा, इस साइड का इस साइड जाएगा, एंड द स्क्रैप विल फॉल डाउन। Sir, sir, is this sir? Now it is falling inside. Now you people can see the burners, where the burners are. इस साइड में देखिए आप, बर्नर्स है, ना। So these burners are also provided for heating and melting also, है ना। तो ये क्योंकि आर्किंग तो सेंटर में होते रहता है, तो बाकी जो एरिया रहता है वहां पे जो साइड वॉल्स में आता है, तो उसको हीट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। एंड सेकेंडली, जब आप सबसे पहली बार ऑपरेशन करोगे तब कहाँ से प्री हीट आएगा? आएगा ही नहीं। दैट टाइम ऑल्सो द स्क्रैप विच इज लोडेड इनसाइड कैन बी प्री हीटेड यूजिंग दिस बर्नर्स, जो साइड्स में लगी रहती है। अभी मेल्ट हो गया है। These 3 electrodes are there. Automatic temperature and sample taking. Sample taking in the sense, it is not just taking out the sample. ये जो electrodes है, जो भी डाला है, उससे भी आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो अंदर का कंपोजिशन, ओके। और इट कैन बी सक्ड आल्सो। एंड यहाँ पर क्या दिया है? एडिशनल ऑप्शनल DRI एंड HBI फीडिंग, ओके। सो आप एडिशनल जो HBI, जो हॉट ब्रिक्वेटेड आयरन है, डायरेक्टली रिड्यूस आयरन है, वो भी ऐड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रोड्स का शेप देखिए, यहाँ पर टॉप में है तीन इलेक्ट्रोड अलग अलग इक्वली स्पेस्ड है। अभी टैपिंग हो जाएगा यहाँ पर। टैपिंग कैसे करेंगे? बाय टिल्टिंग, स्लाइटली टिल्टिंग।
अभी देखिए टिल्टिंग कैसे हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द टिल्टिंग एक्शन दे हैव, दैट्स व्हाई आई सेड कि यू हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर ये एंकर्ड है यहाँ पर सेंटर में, एंड दीज आर द मूवेबल थ्रू द हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। तो इसको जब ये नीचे जा रहा है, आप अगर देखो वीडियो के, नाउ द डिस्टेंस हैज चेंज हियर एंड हियर, है ना, इट हैज मूव tilted towards this one, and because of this separating wall your slag is not get removed, only the metal will flow from this side, है ना। यहाँ पर ये इन्होंने ये लगा के रखा है for closing that one। And I have shown you that rocker arm which is having, it can have an angle of 10 degree, but now with the advancement you have to just tilt it by 4 degree, and with the 4 degree also people are able to tap it। टैपिंग हो गया लैडल में, एंड क्या हो गया कि सीधा हो गया, तो फिर वो टिल्टिंग वहां से होना बंद हो गया। हाँ, टिल्टिंग मींस टिल्ट सीधा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो टैपिंग होना बंद हो गया। नाउ हियर यू कैन सी द डायनेमिक्स ऑफ द गैस। अब ये पूरा जा रहा है, आपको जो जो ये दिख रहे हैं एरोज दिख रहे हैं, द कलर ऑफ द एरोज, द डार्कर रेड इट इज मीन्स वहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, एंड फिर वो मूवमेंट होते 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 फिर इस तरह से जा रहे, उनका टेम्परेचर फिर कम होते होते यहाँ पर, और जो भी इमिशंस होते हैं उसको कंट्रोल किया गया है यहाँ पर लो इमिशन लेवल के लिए। ओवरऑल गैसेस हुड भी दिया हुआ है, हुड से सक भी कर रहे हैं। अभी ये जो टैप होल है उसका फिलिंग है ना, व्हाट दे आर सेइंग, फुल्ली ऑटोमेटिक। अभी आप बैक साइड में देखा आपने, जो इलेक्ट्रोड्स आर टेकन अप, है ना, now you see the electrodes are taken up, ऑटोमेटिकली साइड में आके रहेगा। अभी ये जो है ना टोटल वेसल ही बाहर निकला हुआ है ना। नाउ अगर जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम आया, ये क्या है, इट इज नॉट दिस वन, इट्स द हर्थ ऑफ द फर्नेस, तो कंप्लीट हर्थ एकदम पूरा के पूरा बाहर आ जाता है। सो दिस कंप्लीट पोर्शन कैन बी रिमूव विथ द ऑटोमेटिक कार। तो अगर उसमें कुछ आपका काम करना है लाइनिंग का वगैरह, तो सेकंड वेसल कैन गो इनसाइड एंड दिस कैन बी टेकन आउट, है ना। ये दिख रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वगैरह, यहाँ पे कार्स है यहाँ पर। और अभी तक सब सोच रहे होंगे कि इसमें बारिश आएगी तो क्या होगा, दे हैव अ रूफ आल्सो, सो कंप्लीट प्लांट है यहाँ पर। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू पीपल हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। यस सर। हेलो, हाँ क्लियर है ना।
तो दिस इज हाउ द, मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ अगर मुझे वीडियोस मिलते हैं ना बाकी प्रोसेसेस के, लाइक ब्लास्ट फर्नेस के वगैरह, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, बट मुझे लगता है ब्लास्ट फर्नेस वगैरह ऑलमोस्ट समझ ही गया है सबको, बट स्टिल आई विल ट्राई कि कोई अगर एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू पीपल. सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट, अगर वो बड़े हैं हार्डली 5 मिनट के होते हैं, वी विल डिस्कस हियर. अगर कुछ बड़े हैं तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर यू द लिंक, सो you people can go to that link and see the video for your better understanding. Okay, so this is about the electric arc furnace. Now you have the molten metal, you have the molten metal from the blast furnace, molten metal from the electric arc furnace, and now the next step will be to refine it further if required. Electric arc furnace means if everything has been as per the chemistry, you don't need to do again, but almost it is required. So now the next thing will be ladle refining, or there are processes like degassing also, vacuum degassing. So that we will learn in Monday's session. So tomorrow I will upload the assignment based on whatever we have learned in last 5 days. Okay, it will have right from the iron ore till the electric arc furnace. Okay, and Sunday we will have same time 7 o'clock the session for doubt clearing. Now just let me know whether you people are able to see the uploaded videos and the files or not, because that will be required for you while attempting the assignment also. So if anyone is facing problem, I got a feedback from one person that yes, he is not able to see some of the videos. If others also have the same problem, then I will correct it from my side. If that is not the case, then I have to check the system of that particular person. So let me know whether you people are able to see the videos and the documents uploaded so far. या अगर किसी Yes को sir, कुछ दिखे, yes sir, I can see. ओके, तो आपने पूरे चेक कर लिए सौरभ, निहाल आपने भी चेक कर लिए, 3rd day 4th day 5th day, any issue? No, yes sir, I have checked. Not an issue, sir. Not an issue. Anybody else having any issue in accessing that this one? Because if you are accessing through the mobile, sometimes there is a cache, and you have to clear the cache or the data, the site data, otherwise it will show you the old thing only. So sometimes it happens, so you have to clear the cache from your mobile. If anybody has any issue, just let me know, because after uploading I am checking also through my other systems, so it is visible. One file there is a issue that I will sort it out today, otherwise other files are till yesterday's session it is running good. So if at all there is a issue anybody is having, Pinaki, who has a issue